हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नोट टू सक्सेस चैनल। समस्त को बहुत बहुत स्वागत। लर्निंग रिलेटेड ऑलरेडी दुईटे वीडियो अपलोडेड अच्छे थियोरी क्लास। वर्तमान 50टा MCQ क्वेश्चंस लर्निंग रिलेटेड आम नहीं आसचु। व्हाट इज लर्निंग, नेचर ऑफ लर्निंग, डोमेन्स ऑफ लर्निंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, लर्निंग एज ए प्रोसेस एंड लर्निंग एज एन आउटकम। ये टोटाल विषय उपरे वर्तमान 50टा MCQ क्वेश्चंस आपण मान सामने अच्छी। आदि आप एग्जाम कौन से टीचिंग एग्जाम्स दौरान आपड़ जब सतरे सीरीयस अच्छा ये भिडियोटी को लास्ट पर्यंत देखिए, कारण आपण एग्जाम यही सब क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपोर्टेंट। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रु DLED रु आरंभ करी BEd DLED रु आरंभ करी पूरा आपणकर RHT SSB TGT OSTET OTET आपणकर नवोदय विद्यालय आपणकर आदर्श विद्यालय OAVS आपणकर DSSS सबू किसी एग्जाम्स रिलेटेड यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन से गुड़ाक निश्चित भाव में एंड पर्यंत देखूँ। आ फटाफट कमेंट बॉक्स रे आपण लास्ट को कहे जे आपणकर एति क्वेश्चन रु आपणकर केतोटी आंसर ठीक अच्छी तेबे वर्तमान देरी न करी जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 देखा। व्हाट इज लर्निंग रिलेटेड फर्स्ट ठीक अच्छे। लर्निंग इज बेस्ट डिफाइंड एज लर्निंग को आम एक्चुअली कौन भावुँ जे इज ए टेम्पररी चेंज इन बिहेवियर, ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एंड ड्यू टू एक्सपीरियंस, ग्रोथ इन हाइट एंड वेट, ए सडन चेंज ड्यू टू मैच्योरेशन। फास्ट आम ऑप्शन डी रु देखी ए सडन चेंज ड्यू टू मैच्योरेशन, हठात आपंकर मैच्योरेशन पलि आसा गोटे कौन लर्निंग नो। ग्रोथ इन हाइट वेट, आप मोटा होती पतला होती डेंगा होती गेड़ा होती गोरा होती कला होती नो, यहाँ आमर यहाँ लर्निंग नुहे। रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस आम पढ़ीचु जे लर्निंगटा होची रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। ए टेम्पररी चेंज नो, टेम्पररी चेंज नुहे। लर्निंग टेम्पररी चेंज नुह, लर्निंग होची परमानेंट चेंज। तो आमर आंसर हो गला ऑप्शन बी ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज लर्निंग। ऑलरेडी थियोरी क्लास आपन को बुझाई ये देखंतु आ भितर कोटा लर्निंग नुहे। राइडिंग ए बाइसाइकिल, रिफ्लेक्स ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग माने आपन जानथिबे आखि मिटमिटी करबा, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, स्पीकिंग ए न्यू लैंग्वेज। कोटा हम आ भितर से कही कोटा नुहे नॉट। सब क्वेश्चन को देखिए नॉट लिखी ना पॉजिटिवली लिखी। नॉट लिखी माने राइडिंग ए बाइसाइकिल न्यू साइकिल गोटे आप साइकिल राइड करेंगे शिखे ना ताको फास्ट लर्न करेंगे लर्निंग। सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्व कर लर्निंग हम। स्पीकिंग ए न्यू लैंग्वेज, गोटे नुआ लैंग्वेज आप शिखुं से लर्न आप लर्न कर नुआ लैंग्वेज। राइडिंग ए बाइसाइकिल भी लर्न कर से किसी कोटा नुहे कोटा हम ना ताहले आमर आंसर हो रिफ्लेक्स ब्लिंकिंग। यहाँ आमर हेनी, यहाँ हम आमर आंसर ऑप्शन बी हूँ आंसर। से कौन कोटा लर्निंग नुहे। तापर नेक्स्ट आम क्वेश्चन देखा लर्निंग प्राइमरीली डिपेंड्स अपन। लर्निंग एक्चुअली कहाँ पर डिपेंड करे प्राइमरीली फोकस। प्राइमरीली माने कौन प्राथमिक भाव में माने निहाती भाव में कहाँ पर डिपेंड करे लर्निंग। तो आमर ऑप्शंस अच्छी मैच्योरेशन, मैच्योरेशन जोटा कि आमर एज सहित मैच्योरिटी बढ़ी थाए। मैच्योरेशन कौन ता विषय भी मध्य थियोरी क्लास अच्छी टिके मुझे बुझे लर्निंग जो आम बनईचु। एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस, इंस्टिक्ट्स, हेरिडिटी ओनली। आमर ऑप्शन बी हम ठीक एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस। लर्निंगटा केवल आपणकर एज अनुसार जो मैच्योरेशन आसची एज अनुसार आपणकर जो सबू हेरिडिटरी आपणकर जहाँ सब ग्रोथ होची आपणकर जहाँ भी टिके मैच्योरेशन आसचे से सब लर्निंग नुहे। लर्निंग एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस को लेकिन ही प्राइमरी डिपेंड्स अपन एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस। तो आमर आंसर हो ऑप्शन बी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची who defined learning as the modification of behavior through experience. Who defined as the modification of behavior through experience. experience द्वारा modification of behavior हुए एटा किए आमर डिफाइन करचंदी। तो आर आंसर हम ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो
ठीक अच्छे मन रहा किए डिफाइन करते द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस लर्निंग आज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस किए कहते क्रो एंड क्रो मन रखु Which of the following is an example of observational learning? Observational learning माने ऑब्जर्व करिकी लर्न कराउची को थ्योरीटा आमको एटा आमको जनै छी जे ए थ्योरीटा होची गोटे ऑब्जर्वेशनल थ्योरी कौन हम ट्रायल एंड एरर इमिटेटिंग ए टीचर्स हैंडराइटिंग ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्लासिकल कंडीशनिंग हैबिचुएशन कौन हम इमिटेटिंग ए टीचर्स हैंडराइटिंग ठीक अच्छे इमिटेटिंग ए टीचर्स हैंडराइटिंग माने आपण टीचर्स हैंडराइटिंग को इमिटेट कर ऑब्जर्व करके आपण लर्न कले तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 6 लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस लिमिटेड टू चाइल्डहुड केवल चाइल्डहुड आपण लर्न करती ना डिटरमिन्ड ओनली बाय हेरिडिटी अनुसार ही लर्निंग हुए नो इंडिपेंडेंट ऑफ एनवायरनमेंट द्वारा लर्निंग आमर इंडिपेंडेंट था एनवायरनमेंट उपरे कौन से डिपेंडेंट नुहे एनवायरनमेंट ऊपर भी तो डिपेंडेंट ना आम पढ़ीचु जे लर्निंग फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग आम पढ़ीचे तो से आम देखीचु जे एनवायरनमेंट गोटे फैक्टर लर्निंग को नहीं आम एनवायरनमेंट द्वारा भी आमर लर्निंग हुए कि लर्निंग हो पारे से डिपेंड करे तो ये देखिए इंडिपेंडेंट तो यहाँ भी केवे भी हेनी तो कौटा ठीक हम ए कंटिन्यूअस प्रोसेस यहाँ समस्त जानती ऑप्शन ए जोटा कि समस्ते जानती जे लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस लर्निंग मदर्स वर्म टू नहीं कि टर्म पर्यंत पूरा जन्मर मृत्यु पर्यंत लर्निंग आमर चली थाए यहाँ गोटे हूँ कंटिन्यूअस प्रोसेस तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच साइकोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू ट्रायल एंड एरर साइकोलॉजी किए थे निश्चित भाव आप जानी पढ़ी थे कि ट्रायल एंड एरर थियोरी आप पढ़ी थे ये थियोरी को मुझे बहुत जल्दी आपण मान पाक नहीं आसबि थर्नडाइक यहाँ हम आंसर कौन ऑप्शन बी थर्नडाइक EL थर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थियोरी लर्निंग थियोरी ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 लर्निंग विदाउट रेनफोर्समेंट एंड मोटिवेशन इज टर्म्ड एज लर्निंग विदाउट रेनफोर्समेंट कौन रिवार्ड दबा गोटे मोटिवेशन रिवार्ड्स रेनफोर्समेंट माने पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो पारे नेगेटिव रेनफोर्समेंट भी हो पारे आपको मुझे थियोरी क्लास रे भल भाव बुझेबी बर्तमान केवल फटाफट आंसर दिंतु केतोटी आंसर आपंकर ठीक होची कमेंट सेक्शन में निश्चित भाव में जनइबे क्वेश्चन है लर्निंग विदाउट रेनफोर्समेंट एंड मोटिवेशन इज टर्म्ड एज कहतु फटाफट कौन हम फटाफट अपन भाविक रखु कौन हम लैटेंट लर्निंग तो कौन कहती लैटेंट लर्निंग विदाउट रेनफोर्समेंट एंड मोटिवेशन से लर्निंग को कहते लैटेंट लर्निंग ऑप्शन बी 8 नंबर ऑप्शन बी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची लर्निंग डिफर्स फ्रॉम मैच्यूरेशन लर्निंग टा मैच्यूरेशन ठारू अलगा कहीं ऑप्शन लर्निंग इज यूनिवर्सल मैच्यूरेशन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस लर्निंग डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस लर्निंग इज ऑटोमेटिक कोटा आप भावुं कोटा बेसी ठीक हम आपको जोटा लगे जोटा कि अधिक माने आप भावें जे हाँ यहाँ तो ठीक अच्छे से भी ठीक अच्छे कोटा ताने ठीक हम आप देखिए जोटा अधिक सबू आड़ू सबू रिलेटेड आप देखिए जदि जोटा सबुठू हाएस्ट चांस अच्छे सेटा को ही आप टिक मारे ठीक अच्छे देखो फटाफट कौन हम लर्निंग डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस यहाँ निश्चित भाव में आप जानीपारे एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस द्वारा ही आमर लर्निंग होता है तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर व्हिच वन इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग रा कैरेक्टरिस्टिक नुह लर्निंग इज पर्पजफुल लर्निंग रा नेचर नुहे कोटा हम लर्निंग इज पर्पजफुल इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस से कही कोटा नुहे आपड़ कहीदेवे हाँ यहाँ पर्पजफुल कि कंटिन्यूअस प्रोसेस से कही कोटा नुहे इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इट रिजल्ट्स इन चेंज इन बिहेवियर येस आम बिहेवियर चेंज हुए लर्निंग द्वारा
एटा कंटिन्यूअस प्रोसेस आम एबे पढ़िलु इट इज पर्पजफुल निश्चित भाव में आपन बीएड करछन माने आपनकर पर्पज अछि जे मु टीचरशिप लाइन रे जीबी तो इट इज एंटायरली ड्यू टू ग्रोथ के पूरा हमर ग्रोथ द्वारा लर्निंग हेई थाय कि नो दिस इज नॉट करेक्ट तो हमर कोटा हबो ऑप्शन कोटा हबो हमर करेक्ट नुह कोटा ऑप्शन डी इट इज एंटायरली ड्यू टू ग्रोथ नो तो आमर से पचार नॉट तो आम ए आंसरटा को ही टिक मारिबा ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नेचर ऑफ लर्निंग इज लर्निंग रा नेचर कौन फटाफट आंसर लर्निंग रा नेचर होची डायनामिक एंड कंटिन्यूअस ठीक अच्छे फिक्स्ड परमानेंट नुह लिमिटेड ओनली टू स्कूल नो इनेट नोर डायनामिक एंड कंटिन्यूअस नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग इज बोथ प्रोडक्ट एंड आउटकम प्रोसेस एंड आउटकम फैक्ट एंड फिक्शन इनपुट एंड आउटपुट ओनली तो लर्निंग इज बोथ प्रोसेस एंड आउटकम आपण पढ़ी जे लर्निंग एज ए प्रोसेस एंड लर्निंग एज एन आउटकम नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन रिफ्लेक्ट्स द एक्टिव नेचर ऑफ लर्निंग लिसनिंग पैसिवली ऑप्शन बी एंगेजिंग इन डिस्कशन रे एंगेज हवा स्लीपिंग इन क्लास नोट कॉपी करबा कॉपिंग नोट्स लिसनिंग पैसिवली आपण पैसिवली आपण लिसन करछंती तो कौन हम आ भर आंसर से कही एक्टिव नेचर ऑफ लर्निंग नॉट लगेनी से कही कौटा एक्टिव नेचर ऑफ लर्निंग तो कौटा हम लिसनिंग पैसिवली तो जमा हेनी एक्टिवली देते निश्चित भाव में से लर्न होता से कही स्लीपिंग इन क्लास नो कॉपिंग नोट्स नो तो आंसर हम आमर एंगेजिंग इन डिस्कशन रे एंगेज आपण होचंती माने किछि गोटे लर्न करूछंती नेक्स्ट क्वेश्चन nature of learning indicates that is unidirectional occurs only in formal settings केवल फॉर्मल सेटिंग रे केवल आम लर्निंग हुए occurs everywhere and every time is limited to text book से कही आमर लर्निंग टा इंडिकेट कौन करुँची इज अनइनडिरेक्शनल माने आपण लर्न कर जानते आपण कौ दिगरे जीवे कुआडे जीवे आपण फ्यूचर कौन हम आप जानना इनडिरेक्शनल नो अकर्स ओनली इन फॉर्मल सेटिंग केवल फॉर्मल स्कूल रे ही आम लर्न कर आउ कोठी लर्न कर नो अकर्स एवरीवेयर एंड एवरी टाइम यस दिस इज करेक्ट अकर्स एवरीवेयर एंड एवरी टाइम ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आपण जदि स्पीड हो जाउची वीडियोटी जदि स्पीड हो जाउची आपण टिके पॉज करंतु पॉज करिकी आंसर भाबंतु आपण कोटा आंसर ठीक करचंती देखंतु तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा तापर आपण जानि परिबे जे आपनकर केतरी ठीक अछि केतरी भूल अछि जदि आपनको समय मिलुनी आंसर भाबिया पे तो वीडियो को पॉज करिकी आपण आ टिके भाबंतु आंसर कोन हबो नेक्स्ट क्वेश्चन होचे लर्निंग टा कोन लर्निंग इज सोशली मीडिएटेड entirely personal and isolated learning entirely personal and isolated option C unrelated to environment रो किछि रोल नहीं लर्निंग रे dependent only on memory केवल मेमोरी होची कोन लर्निंग केवल आपण मन रखिले घोषिले से सब होची कोन लर्निंग तबे ऑप्शन हबो कोन ऑप्शन हबो ए सोशली मीडिएटेड लर्निंग होची कोन सोशली मीडिएटेड देन नेक्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच व्यूज लर्निंग आज कंस्ट्रक्टिविस्ट आपण निश्चित भाव में मन रखिथे जे कंस्ट्रक्टिविस्ट किए बीएड आपण जदि करचंती निश्चित भाव में आपण जानथिबे जे कंस्ट्रक्टिविज्म रो किए फादर किए कमेंट सेक्शन रे क्वेश्चन टा आपण निश्चित भाव में आंसर शेयर करंतु जे कंस्ट्रक्टिविज्म रो फादर किए निश्चित भाव में एटा होची क्वेश्चन ऑफ द डे आप निश्चित भाव में कमेंट सेक्शन रे आर आंसर लिखिबे फर्स्ट ऑप्शन है पैसिव ऑब्जर्वेशन एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच व्यूज लर्निंग आज
passive absorption, passive, active knowledge construction, memorization, imitation only. तो कौन हम निश्चित भाव में आप जापे कौटा अधिक प्रिफर हो आंसरटा बेसी ठीक लगुच आपको देखो एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन ठीक अच्छे ऑप्शन कौन हम एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन आपण कौन कर नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर एक्टिवली नेक्स्ट क्वेश्चन भावुँ 25टा क्वेश्चन करवा आउ नेक्स्ट 25टा क्वेश्चन मु पार्ट 2 रे आनिबी ठीक अच्छे देह असुस्थ लगुथबारु 50टा क्वेश्चन हो पारे 25 पर्यंत जावा नेक्स्ट 25टा क्वेश्चन मु बहुत जल्दी आपण मन नहीं आसबि आउ से नेक्स्ट वीडियोटी देखा निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे Which of the following is a misconception about learning? Which of the following is a misconception about learning? What a misconception अच्छी कोड़ा it continues throughout life ये तो ठीक अच्छी conception तो ठीक अच्छी it continues throughout life it involves cognitive affective and psychomotor changes yes आमे learning रा domains पढ़ीचु 3टा domains आमे पढ़ीचु cognitive affective and psychomotor changes तो यहाँ तो लर्निंग रा ठीक अच्छे नेक्स्ट हूँ इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ टीचिंग ओनली इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ओनली टीचिंग केवल टीचिंग द्वारा टीचिंग रो गोटे प्रोडक्ट लर्निंग इट रिजल्ट्स इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन एटा तो ठीक अच्छे तो कौटा आमर ठीक नहीं ऑप्शन सी यहाँ है आमर राइट ठीक अच्छे से कही कौटा मिसकनसेप्शन यहाँ गोटे नेगेटिवली से कही तो ऑप्शन आप नेगेटिव देखिए पॉजिटिव एगुड़ा सब ठीक एगुड़ा सब आमर कौन ठीक रिजल्ट इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन तो सेटा लर्निंग ना इट इनवॉल्व्स कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर चेंजेस यहाँ तो पूरा ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट है इट कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ हाँ यहाँ पूरा लर्निंग कौन लाइफ लंग प्रोसेस तो आमर ये नेगेटिव ऑप्शन कौन हो केवल ऑप्शन सी हो राइट ठीक अच्छे इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ टीचिंग ओनली यहाँ हूँ मिसकनसेप्शन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन है learning is said to be effective when learning is said to be effective learning से effective हम केते बेले देखो ऑप्शन ऑप्शन देखो ऑप्शन ए ऑप्शन ए देखो इट इज रोट मेमोराइजेशन लर्निंग कौन रोट मेमोराइजेशन इफेक्टिव नो इट लीड्स टू मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग यस मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग देछि माने किछ गोटे पॉजिटिव अच्छे से देखो क्वेश्चन देखिए पॉजिटिव रे देछि से नेगेटिव किछि देनी लर्निंग इज वैल सेड टू बी इफेक्टिव व्हेन इट इज रोट मेमोराइजेशन एटा तो नेगेटिव दे देला आमर तो नेगेटिव आंसर मागिनी से पॉजिटिव आंसर मागिछि इट लीड्स टू मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग इट इग्नोर्स लर्नर्स इंटरेस्ट लर्नर इंटरेस्ट अफेक्ट करेनी लर्निंग it is mechanical no this is not correct only this b option b is correct effective learning कौन हबो meaningful understanding option b आमर ठीक हबो option b next question learning in real sense implies learning in real sense implies only memorizing internalization and application only observing only repeating कौन हबो हमर आंसर internalization and application ठीक अच्छे ऑप्शन हबो हमर हबो internalization and application next question the statement learning is goal directed means the statement learning is goal directed means the mane kono it always requires a reward it proceeds towards some objective it has no direction it is accidental option it proceeds
टुवार्ड्स सम ऑब्जेक्टिव आमर लर्निंग रो किछि ऑब्जेक्टिव तो थाए ना आपण गोटे विषय पढ़ुचंती पिला देखिबा आपण जे कोनोसी विषय पढ़िबे तार पूर्वरु आमर कोन थाए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव सब न थाए जनरल ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आपको आपण बीएड रे मध्ये पढ़िथिबे ठीक अछि जेतले करिकुलम बना जे सेते बेले पिला मानकर जो पाठ पढ़ा विषय ता पूर्वरु आपण कोन देबे ऑब्जेक्टिव्स पिलाटी ए विषय पढ़िबा द्वारा तार कोन हबो से या सिखिबो जनरल ऊपर गोटे थाए आ गोटे स्पेसिफिक ऊपर गोटे थाए तो आमर लर्निंगटा कौन थाए सम ऑब्जेक्टिव टुवार्ड्स प्रोसीड टुवार्ड्स सम ऑब्जेक्टिव ठीक अच्छे ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन हु गेव द 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग किए देथिले हु गेव 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग कौन कौन 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर किए देथिले हु गेव द 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग ऑप्शन कौन हबो ऑप्शन बी ब्लूम देथिले ठीक अछि तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची कॉग्निटिव डोमेन डील्स विथ कॉग्निटिव डोमेन माने कौन सेटा बुझाई थियोरी क्लास रे बुझाई निश्चित भाव में आपण भावुचे बुझीपे फिजिकल स्किल्सटा हूँ साइकोमोटर इमोशनल डेवलपमेंट हूँ आमर अफेक्टिव डोमेन इंटेलेक्चुअल कौन हो इंटेलेक्चुअल आमर ठीक आंसर हो ऑप्शन सी कॉग्निटिव माने मेंटल इंटेलेक्चुअल रीजनिंग आपण जहाँ भी भावुचे तर्क वितर्क ये सब हूँ कॉग्निटिव आमर जीव इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ अफेक्टिव डोमेन फोकसेस ऑन अफेक्टिव एवं सांग कही लैंग्वेज लर्निंग ओनली नो स्किल्स ऑफ हैंड सेटा हो आमर साइकोमोटर वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स यही ऑप्शन एटा ही ठीक हम ठीक अच्छे 23 नंबर ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज नॉट ए लेवल ऑफ ब्लूम्स कॉग्निटिव डोमेन रे आमर आ भितर कोटा नहीं आपन जानते 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग अच्छी कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर ताको भी बहुत सारा पार्ट्स रे डिवाइड करा जायछि जेमते कॉग्निटिव रो नॉलेज हबो एप्लीकेशन हबो तो कोटा हबनी से पचारछि कोटा हबनी ऑप्शन सी वैल्यूइंग हबनी ठीक अछि नॉलेज हबो एप्लीकेशन हबो सिंथेसिस हबो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ ब्लूम्स गोटे अच्छी ब्लूम्स ऑब्जेक्टिव सेटा निश्चित भाव में आप पढ़े आ मुझे भावुची आपण मानू निश्चित भाव में बुझेबी निश्चित भाव में ता उपरे वीडियो बनैबी ठीक अच्छे आज लास्ट क्वेश्चन आम देखा आ बाकी 25टा क्वेश्चन मु नेक्स्ट केबे निश्चित भाव में आपण मन पे नहीं आसबी निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु आउ पाखर थिबा बेल आइकन को निश्चित भाव में प्रेस करंतु जहाँद्वारा कि सब नोटिफिकेशन जल्दी आपन पहुँची जिवो आपन पाखरे 25 नंबर क्वेश्चन रहा आ जदि किसी क्वेश्चन रिलेटेड आपनकर किसी भी असुविधा अच्छी किसी बुझी पाना निश्चित भाव में कमेंट सेक्शन में कहतु निश्चित भाव में नेक्स्ट वीडियो आपनकर जिते भी सब क्वेरीज थी जी जदि आपनकर बुझापी थी डाउट्स निश्चित भाव में ताको क्लियर करी तापर आमर लास्ट क्वेश्चन होची साइकोमोटर डोमेन रिलेट्स टू साइकोमोटर कहले कौन बुझाते आप साइकोमोटर एवं मुझे कही सारी अलरेडी पूर्व क्वेश्चन मानक अलरेडी बुझे सारी कॉग्निटिव कौन अफेक्टिव आउ साइकोमोटर तो आमर ऑप्शन हो इमोशनल एक्सप्रेशन नो यहाँ हो आमर कौन अफेक्टिव भाभी दिंतु जहाँ आप पढ़ुं जस्ट इमेजिन करंतु फील करंतु अफेक्टिव माने कौन अफेक्शन ठीक अच्छे जोटा कि अनुभव आप करती आपड़ केवल फील करें अफेक्टिव डोमेन मोटर साइकिल आप जानते मोटर साइकिल से कौन आम गाड़ी चलाऊ गाड़ी को आम फील करूँ कि फील करूना तो आप जानीपर साइकोमोटर मोटर माने मोटर बाइक मोटर साइकिल ताने कि आपको रिलेट कर दिंतु जे मत चलैबार अच्छी तो फिजिकल होगला फिजिकल एक्टिविटी जी साइकोमोटर सेमती कॉग्निटिव आसीगला कौन रीजनिंगटा कौन हम कॉग्निटिव हम कॉग्निटिव माने सबकिछि मुंडर खेल आप दिमाग में जहाँ जहाँ सब कर कैलकुलेशन कले रीजनिंग कले जहाँ जहाँ प्रोब्लेम सॉल्व कले से सब कौन रीजनिंग कले ये सब कौन
आपणकर मुंडरे काम हो सब हूँ कॉग्निटिव किंतु साइकोमोटरटा कौन फिजिकल एंड मोटर स्किल्स ठीक अच्छे ऑप्शन कौन हम बी तो आमर 25 नंबर ऑप्शन कौन हो ऑप्शन बी फिजिकल एंड मोटर स्किल्स ठीक अच्छे 26 क्वेश्चन हो 26 क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव अफेक्टिव मु आपन को कही जे अफेक्टिव कौन जोटा कि आम फील कर पारू आमर 3टा डोमेन्स थाए ब्लूम्सकर आमर 3टी डोमेन्स थाए गोटे हूँ कॉग्निटिव आ गोटे हूँ अफेक्टिव आ गोटे है साइकोमोटर ठीक अच्छे कॉग्निटिव मु आपन को बुझे सारी जे यहाँ हूँ आम मेंटल काम जहाँ भी आम मुंडरे जहाँ भी आम निज मस्तिष्क जहाँ भी किसी भावुँ रिकल करवा रिमेम्बर करवा फॉरगेट करवा आउ जहाँ भी आप कैलकुलेट कर सब माइंड रे आपण किसी गोटे लॉजिक दौरान सेटा भी गोटे तर्क वितर्क ये सबू आपण किसी गोटे कैलकुलेट कर किसी गोटे प्रोब्लेम सॉल्व कर सब आम मेंटल ऑर्डर तापर हूँ कॉग्निटिव अफेक्टिव अफेक्टिव मुझे जोटा कि आम केवल फील करूँ ठीक अच्छे जहाँ भी आम फील करूँ आ साइकोमोटर जोटा कि आप फिजिकाली जहाँ भी एक्टिविटी कर ये देखूँ अफेक्टिव कौन हम टू रिकॉल इवेंट्स नो रिकॉल इवेंट्स तो हो मेंटल एक्टिविटी से गोटे आमर हो कॉग्निटिव एप्रिशिएट कल्चरल डाइवर्सिटी टू राइट एंड एसे एसे गोटे राइट करदे टू ड्रॉ ए मैप ये सब किसी भी हेनी केवल ए भी हेनी ये आमर ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन बी हूँ आमर करेक्ट एप्रिशिएट कल्चरल डाइवर्सिटी ठीक अच्छे तापर आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आमर एटा बी नंबर ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा डेमोन्स्ट्रेटिंग ए साइंस एक्सपेरिमेंट बिलोंग्स टू डेमोन्स्ट्रेटिंग ए साइंस एक्सपेरिमेंट गोटे साइंस एक्सपेरिमेंट बिलोंग्स टू व्हाट निश्चित भाव में साइकोमोटर से आपणकर मेंटाली आउ ऑल्सो फिजिकली आपन से एक्टिव रोचंती से साइंस एक्सपेरिमेंट होगला आमर साइकोमोटर ठीक अच्छे जो थी कि आप मेंटाली भी आपड़ कौन कर मेंटाली आप एक्टिव अच्छा ऑल्सो फिजिकली आप हाथ में सबकि बनाऊँ निश्चिंत भाव में से आमर हो साइकोमोटर डोमेन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट आपण निश्चित भाव में मत कमेंट रे जनइबे जे आपनकर केतोटी क्वेश्चंस ठीक है आउट ऑफ एतिकी क्वेश्चंस आपनकर केतोटी क्वेश्चंस ठीक है निश्चित भाव में आपण कैलकुलेट करथांतु आ जनइबे निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट आप कोटा ठीक अच्छे देखंतु निश्चित भाव में एप्लिकेशन कॉग्निटिव कारण मोटर कोऑर्डिनेशन से अफेक्टिव तो हेनी एप्लिकेशन कर नॉलेज गेन करछंती किछि गोटे आपण प्रॉब्लम सॉल्व कर पाउछंती एप्लिकेशन कर पाउछंती सेटा हमर हे जिवो कॉग्निटिव देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रिसीविंग रेस्पोंडिंग वैल्यूइंग आर लेवल्स ऑफ रिसीव कर रेस्पॉन्ड कर वैल्यू कर पाउछंती ए सब हूँ लेवल्स ऑफ कौन हम अफेक्टिव डोमेन ऑप्शन बी राइट हो अफेक्टिव डोमेन जो कि रिसीव कर रेस्पॉन्ड कर वैल्यूइंग कर पाउछंती ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन perception set guided response are sub levels of perception set guided response ये सब आमर हो साइकोमोटर डोमेन ठीक अच्छे परसेप्शन सेट आ गाइडेड रेस्पॉन्स हो आमर साइकोमोटर डोमेन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच इज ए एटा देखंतु पार्ट डी फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग ठीक अच्छे व्हिच इज ए पर्सनल फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग व्हिच इज ए पर्सनल फैक्टर अफेक्टिंग
लर्निंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन पर्सनल फैक्टर ना टीचिंग एड्स पर्सनल फैक्टर ना करिकुलम ऑब्वियसली मोटिवेशन है आमर पर्सनल फैक्टर तो आमर ये ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग एबे देखिबा व्हिच इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग एनवायरमेंटल फैक्टर डायरेक्ट से पचारछि एनवायरमेंटल फैक्टर कोडा देखंतु इंटेलिजेंस फैमिली बैकग्राउंड एज हेल्थ कोडा ठीक हम निश्चित भाव में आमर ऑप्शन भाविबा को आपण जदि समय लगुच तेणुक भिडटी को पॉज करूँ तापर भावतु तापर निज आंसर को नोट रे लिखंतु देखिए आपंकर केतोटी भूल होची केतोटी ठीक होची निश्चित भाव में कमेंट रे हमको शेयर करेंगे। ऑप्शन बी होची यार राइट आंसर व्हिच इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर फैमिली बैकग्राउंड यहाँ हूँ आमर एनवायरमेंटल फैक्टर इंटेलिजेंस एज हेल्थ ए सबू आमर हेरिडिटी अनुसार आमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होची सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अफेक्ट्स लर्निंग बाय सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस affects learning by providing equal opportunities, having influencing exposure and facilities, having no effect, being unrelated. Socio-economic status affect learning by providing equal opportunities. Socio-economic status affect करे learning को by influencing exposure and facilities. Option B हो जब हमारा right ऑप्शन बी है आमर राइट आंसर ठीक अच्छे। तेबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच फैक्टर प्लेज ए की रोल इन सस्टेनिंग लर्निंग फैक्टर की रोल फैक्टर इन सस्टेनिंग लर्निंग ये आमर पनिशमेंट सक्सेस सस्टेनिंग लर्निंग पाई आमर कोटा गोटे की रोल प्ले कर फॉरगेटिंग मोटिवेशन और लक निश्चित भाव में ऑप्शन कौन ठीक है मोटिवेशन टा आमर एक की रोल इन सस्टेनिंग लर्निंग ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हेरिडिटी इन्फ्लुएंसेस लर्निंग बाय डिटरमिनिंग the teaching method, providing innate abilities, giving direct knowledge, no effect. Question रा आंसर कौन होगा हेरिडिटी इन्फ्लुएंसेस लर्निंग बाय ऑप्शन बी इज राइट प्रोवाइडिंग इनेट एबिलिटीज ठीक अच्छे हेरिडिटी आमको कौन करे इनेट एबिलिटीज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन which factor directly affects language learning which factor directly affects language learning ru directly affect language learning which factor एटा हमर न्यूट्रिशन ना सोशल इंटरेक्शन ना क्लाइमेट ना स्लीप पूरा डायरेक्ट अफेक्ट्स करे लैंग्वेज लर्निंग को लेकिन पूरा डायरेक्ट अफेक्ट्स करे लैंग्वेज लर्निंग ऊपर आपण लैंग्वेज लर्न करछंती आ सेइथरे आपनकर गोटे बड़ फैक्टर की रोल अच्छी सेटा किए न्यूट्रिशन ना सोशल इंटरेक्शन ना क्लाइमेट ना स्लीप क्वेश्चन टिके बुझीदेले निश्चित भाव में आपण आंसर ठीक दे पारबे। आर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट सोशल इंटरेक्शन जेते सोशल इंटरेक्शन हम से लैंग्वेज लर्न आपण कर पारबे कंटेक्चुअल लर्निंग ठीक अच्छे आ केवल आपण से भाषा समाज रे रहिले ही से भाषा आपण जल्दी सीख पारे ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट देखिबा देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन टीचर्स पर्सनालिटी इन्फ्लुएंसेस लर्निंग बिकॉज टीचर्स पर्सनालिटी इन्फ्लुएंसेस लर्निंग बिकॉज इट प्रोवाइड्स डिसिप्लिन ओनली टीचर्स पर्सनालिटी ठीक अच्छे टीचर्स पर्सनालिटी इन्फ्लुएंसेस लर्निंग बिकॉज इट प्रोवाइड्स डिसिप्लिन ओनली it inspires and motivates learners it decides curriculum it removes heredity impact पॉज करंतु पॉज करके आंसर भावंतु तापरे वीडियो को
ऑन करेंगे। ठीक अच्छे यार आंसर 37 क्वेश्चन आंसर आमर हो ऑप्शन बी इंस्पायर्स एंड मोटिवेट्स लर्नर्स। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर A learner's attitude towards subject influences. A learner's attitude towards subject influences. A learner's attitude towards subject influences. आर कौन है ऑप्शन towards subject influences forgetting speed, effectiveness of learning, teaching methods, teacher salary. Teacher salary, teaching method, effectiveness of learning, forgetting speed. A learner's attitude towards subjective influences. आर आंसर हो इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग। ठीक अच्छे एटीट्यूड तार केमती रोचे से हिसाब से तार लर्निंग उपर भी मध्य इफेक्ट पड़ी थाए। जेकोसी सब्जेक्ट उपर गोटे पिलार एटीट्यूड केमती अच्छी जे मोर तो मैथ हुए नहीं आ समस्या भी कहते मोर भी तो मैथ हुए नहीं आ सार भी कहते मोर तो मैथ हुए नहीं आ छाड़ मुझे कौन करी अरे भल सार मैम जदि आसिक आपन को पढ़ाऊँ भी तथापि आप मैथ बुझीपार कि सब्जेक्ट आपणकर किसी भी नॉलेज आपन गेन कर पार कहीं कारण आपणकर गोटे एटीट्यूड अच्छी मोर तो हेनी आ मोर तो एमती मैथ हुए आ तो छोट बेलू मैथ तो वीक आ बुझीपार यहाँ हूँ गोटे लर्नर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स सब्जेक्ट सेटा कौन करे इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग सेटा इन्फ्लुएंस करे इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन Which one is not a factor affecting learning? Which one is not a factor affecting learning? Intelligence, motivation, climate of classroom, hair color. Obviously hair color affect करेनी learning को। Next question peer group affects learning by peer groups affect a peer group affects learning by creating competition and cooperation. by creating competition cooperation करके आमे लर्निंग हो पारे चेंजिंग हेरिडिटी डिटरमिनिंग टीचर्स रोल और नोन कौन हम आमर ऑप्शन हो क्रिएटिंग कंपटीशन एंड कोऑपरेशन। पीयर ग्रुप रे आपण देखिए जिते आपण किसी पिला पीयर ग्रुप रे भल पढ़ी पारती कहीं कारण तांको भितर कंपटीशन थाए और कोऑपरेशन मध्य थाए जे एई चैप्टरटा तो काली पढ़ी आसी मु पढ़ी आसबि तापर आमे तू मते क्वेश्चन पचारि मु तते क्वेश्चन पचारि। ठीक अच्छे ना क्लासरूम रे भी मध्य पीयर ग्रुप डिस्कशन हो पारे तो आर अफेक्ट थाए लर्निंग उपरे। तो वर्तमान आमे देखिबा क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 41 लर्निंग एज ए प्रोसेस एंड आउटकम। लर्निंग एज ए प्रोसेस मीन्स learning as a process it is only a product. It involves continuous experiences and changes. It is fixed and permanent. It has no relation with experience. Option B it involves continuous experiences and changes. Next question learning as an outcome implies learning as an outcome कोटा हम लर्निंग एज एन आउटकम कहले इट एंड्स विथ टीचिंग इट रिजल्ट्स इन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और परफॉर्मेंस चेंजेस इट कैन नॉट बी मेजर्ड। ऑप्शन डी इट इज एक्सीडेंटल। ऑप्शन बी इट रिजल्ट्स इन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और परफॉर्मेंस चेंजेस। Question number 43 which is a process oriented view of learning? Which is a process oriented view of learning? Process oriented memorization, engaging in collaborative tasks, rote recitation, copying notes. Process oriented view of learning. Option B engaging in collaborative task रे engage हवा it is a process oriented view of learning. Next question 44 which is an outcome based statement? Outcome based
लर्निंग एज एन आउटकम कहले आ भितर को ऑप्शन टा हबो 44 व्हिच इज एन आउटकम बेस्ड स्टेटमेंट ऑप्शन student is trying to solve problems, student has developed problem solving skills, student is attending the lecture, student is reading a book. Option B, student has developed problem solving, student has developed problem solving. लास्ट को पिलाटे सबु किछि शिखिकी सबु किछि स्किल को जानिकी लास्ट को से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाउछि सेटा होछि तारा आउटकम. नेक्स्ट क्वेश्चन 45. In outcome perspective, learning is judged by. In outcome perspective, learning is judged by only attendance, performance, skills, competencies, teachers' effort, time spent. Learning is judged by in outcome perspective. The performance, skills, and competencies. Option number B is the correct one. Next question 46. It have option B. Next question 45, 46. As a process, learning is best described. Process learning as a process कहले an event at one time, a sequence of experiences leading to changes, limited to exams, only classroom activities. As a process, learning is best described as option number B, a sequence of experiences leading to change. As a process, a sequence of experiences leading to change. Next question 47. Which one is not an example of learning as outcome? Learning as outcome. Learning outcome रो गोटे example नुहे. 47 question number. Improved communication skill, acquired knowledge of history, participation in ongoing discussion, developed positive attitude. Learning as outcome, improved communication skill, acquired knowledge of history, participation in ongoing discussion, developed positive attitude. Option number C, participation in ongoing discussion. Ongoing discussion टा learning as an outcome नुहे, सेटा learning as a process हबो. Next question, question number 48. 48 question number. Learning as process emphasizes. Learning as process emphasizes. 48. How learning takes place, what has been achieved, end results only, exam marks. Option number A, how learning takes place. Learning as process. Process रही माने अचीव हो पारे अचीवटा लास्ट को आउटकम, एंड रिजल्ट्स ओनली आउटकम, एग्जाम मार्क्स मध्य आउटकम. नेक्स्ट क्वेश्चन आर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. Which statement reflects both process and outcome? Both process and outcome. Student is practicing drawing and has improved sketching skills. Student is memorizing only. Student is attending class without understanding. Student is sleeping. Which statement reflects both process and outcome? Learning as a process and an outcome both. Student is practicing drawing and has improved sketching skills. प्रैक्टिस करी करी लास्ट को ता स्केचिंग स्किल को मध्य इम्प्रूव कला, सेटा होची प्रोसेस एंड आउटकम बोथ. क्वेश्चन नंबर 50. Which is correct? Learning is only a process. Learning is only an outcome. Learning is both a process and an outcome. Learning is neither. It is about easy question. Learning is only an outcome नुहा कि learning is only a process नुहा.
कि लर्निंग इज नाइदर नो। ऑप्शन नंबर सी लर्निंग इज बोथ ए प्रोसेस एंड एन आउटकम। नोट टू सक्सेस चैनल को जदि एपर्यंत सब्सक्राइब न कर जल्दी फटाफट सब्सक्राइब करनियंतु। आउ बहुत सारा थियोरी जिते सारा आमर एजुकेशनल पेडागोजी जिते सारा अच्छी एजुकेशनल साइकोलॉजी आमर पेडागोजी फिलोसफी समस्त टॉपिक रिलेटेड सब वीडियो आसीबो। प्रथमे थियोरी तापर एमसीक्यू क्वेश्चंस आउ ता सहित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मध्य आनिबी। आउ जल्दी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु। आउ जदि आपको क्लास टे भल लागला निश्चित भाव में कमेंट रे हमको जनातु। आ केतोटी आंसर आपनकर ठीक अछि निश्चित भाव में जनातु। आउ चैनल सहित जोड़ीबा पई चैनल सहित जड़ित होबा पई आपण निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आ कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी कहि दियंतु केतोटी आंसर आपनकर ठीक हैला। आउ नेक्स्ट वीडियो को अपेक्षा करंतु। रहउची धन्यवाद।